कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे आपका ये एक प्लेन मिरर था आपका, और प्लेन मिरर पे जब कोई भी रे ऐसे जाती है, दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द 90 डिग्री perpendicular from the mirror, and this is called the normal. So this angle is known as angle of incidence. Angle of reflection. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. So this was the normal, and this ray is the ray of reflection, and this angle is known as the angle of reflection. Next is blind spot. At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells. So, no vision is possible at this spot, and this is called the blind spot. Next is Braille. Braille is a system with raised dots read with fingers by the people who are blind. यानी ये एक टेक्निक है जो ब्लाइंड पीपल की रीडिंग के लिए होती है, जिसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा रेज्ड फॉर्म में होते हैं, raised dots की form में. Cones are the cone shaped cells in the retina of the eye which are sensitive to bright light. They are color sensitive and give sense about the color of an object. Next is our cornea. The transparent front पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड द कॉर्निया. तो जो हमारी आँख के ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज नॉन एज द कॉर्निया. नेक्स्ट इज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. This was a regular reflection from a plane mirror. If this surface is not regular, this is in the form of this like situation, then it is called irregular reflection. Yani when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as the diffused or irregular reflection. Next is our incident rays. The light ray which strikes any surface is called the incident ray. This was the incident ray or ray of incidence. Next is iris. The dark muscular structure behind the cornea is called iris. Kaleidoscope. Kaleidoscope is a device which has tilted mirrors to other at an angle so that multiple images of objects are visible. Next is our lateral inversion. In an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. When you are in front of mirror, you see it that left appears right and right appears left. This is known as the lateral inversion. Laws of reflections क्या है? First law है, laws of reflection are that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. When we make this diagram, if this angle is 30 degree, then this will also be of 30 degree. Means angle I is equal to angle R. नेक्स्ट लॉ है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन. जैसे हमने ये मिरर बनाया था आपका, तो एक जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे है इसी पर आपका नॉर्मल है और इसी पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे है. ये तीनों ही चीज़ें आपकी एक ही प्लेन में लाई करती हैं. Next is pupil. This is the part of eye in the iris. There is a small opening called the pupil. Next is our reflected rays. The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray. जब भी कोई चीज़ मिरर में देखते हैं, there comes a lot of rays. दिस इज ए डिस्कशन ऑफ ओनली सिंगल रे. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर में दिखाई देता है वो बहुत सारी रेज का ग्रुप है. तो वो सारी रेज जो वापस आ रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जो आपको मिरर में दिखाई दे, दीज रेज आर नोन एज रिफ्लेक्टेड रेज. देन रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक. दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. जैसे इसके ऊपर ये टकराया और आपका बैक आया तो इसकी डायरेक्शन एकदम से बदल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. Regular reflection when all the parallel rays are reflected from a smooth surface are
पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे आप क्या करते हो, इस तरीके से बहुत सारी रेज ऑफ इंसिडेंस बनाते हो, तो आपकी आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन will be called as regular reflection. Next is retina, the light sensitive layer at the back of the eye that receives images and send them to the brain through optic nerves is called the रेटिना। जिस जो लाइट को सेंस करता है, जो पार्ट आपका आँख का जो रिसीव करता है आपकी जितनी भी रेज आती हैं इमेजेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेटिना। नेक्स्ट इज रोड्स, जैसे आपने कोन्स स्टडी किए थे। कोन्स क्या होते हैं, आपके ब्राइट लाइट के लिए, कलर्स के लिए होते हैं। इन द सेम वे, rods are the rod shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to dim light। तो ये क्या है, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो थोड़ा अंधेरा होता है उस टाइम पे रोड्स एक्टिव हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा देखने में हेल्प मिलती है। जबकि जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में कह लीजिए, डे टाइम में कह लीजिए, कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो आपके उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं। तो रोड्स और कॉन्स दो टाइप ऑफ सेल्स हैं जो आपके विजुअलिटी में देखने में हेल्प करते हैं। तो इतने ही हैं आपके ये कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।